आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज दुनिया के नक्शे पर लकीरें खींची जा रही हैं और इन लकीरों के बीचों बीच एक ऐसी कहानी जन्म ले रही है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान तक हलचल मचा दी है। क्या मशरिक़ वस्ता में बारूद की बू अब अमन के गुलाबों में बदलने वाली है या ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? ईरान ने एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से साफ इनकार किया है। तेहरान का लहजा सख्त है, इरादे अटल हैं और पैगाम वाज़े है कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन इस इनकार का असर वाशिंगटन में यूँ हुआ कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो पाकिस्तान के लिए उड़ान भरने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा मौखर कर दिया। हैरत की बात है कि एक तरफ ईरान और अमेरिका की तलखियां हिमालय से ऊंची हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ताकत के नशे में चूर सुपर पावर के सदर अब इस दलदल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनके अपने फौजी जनरल सख्त बयान दे रहे हैं। सुने अमेरिकी जनरल क्या कहते हैं। We don't take an oath to a country. We don't take an oath to a tribe. We don't take an oath to a religion. We don't take an oath to a king or a queen or a tyrant or a dictator. And we don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual. We take an oath to the Constitution, and we take an oath to the idea that is America, and we're willing to die to protect it. कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप मुक्के लहराकर ईरान को इबरत का निशाना बनाने की धमकियां दे रहे थे, जो कह रहे थे कि ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, आज उनके लहजे में शहद जैसी मिठास कहां से आ गई। आज ट्रंप कहते हैं कि हम जंगबंदी में इजाफा कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के लीडर्स ने हमें ऐसा करने को कहा है। अब सवाल ये है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पे अब नहीं बैठ रहा तो फिर क्या होगा। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए इतना शिद्दत पसंद क्यों बन रहा है? क्या ट्रंप इस माहौल से वाकई निकलना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ वो बयानबाजी करते हैं, प्रोवोक करते हैं, धमकियां देते हैं, दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात की बात भी करते हैं और पाकिस्तान का नाम लेके अमेरिकी सदर अपनी खोई हुई साख बचा रहे हैं। इसी सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल साहब, सेंटर मुस्लिम मून से आपको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, ये जो डेवलपमेंट हुई नई, आप इसको कैसे देखते हैं? और ईरान मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आया, बड़ा सख्त अपना उसने स्टांस लिया हुआ है। जाहिर सी बात है, हर मुल्क का अपना कौमी मफाद है और वो पहले उसको देखना भी है। और जो कुछ हुआ पिछले 52-53 डेज़ के अंदर आज 53 डे है, तो उसमें उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बेस बनाई है, जो कल हमने देखा था बासराक्ची साहब का फॉरेन अफेयर मिनिस्टर का जो ट्वीट आया था। आप कैसे देखते हैं? जब देखें, इसकी बुनियादी एक गैर कानूनी फैसला था अमेरिका का नेतन्याहू या इजराइल के कहने पे, और ये जंग शुरू की जो बैनुल-अक़वामी कवानीन को बिल्कुल बालाए ताक रख के इन्होंने की। तो ये एक एब्सोल्युटली गैर कानूनी हरकत थी अमेरिका की और इजराइल की, कि एक मुल्क के साथ जो डायलॉग में आपके साथ अंगेज था और आपकी बातों से काफ़ी एग्री कर रहा था और एक होप दिलाई जा रही थी, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी कि हम करीब हैं, आपने डायलॉग का टाइम अपनी असेंबली के लिए इस्तेमाल किया और फिर उनकी पीठ पे छुरा घोंपा और फिर उनके लीडर्स को कत्ल किया। आप सोचें कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। उनके लीडर, उनकी वाइफ, उनके बेटे, उनका सन इन लॉ, उनकी बेटी, और सबको वो ख़त्म कर दिया। तो ये था। अभी भी ईरान का मौक़िफ़ जस्टिफाइड है। वो ये कहते हैं कि आपने अगर ये कहा है कि ये हम सीज़ फायर करते हैं तो सीज़ फायर कर ली, लेकिन आपने फिर हमारे बेसिस का नाकाबंदी कर दी है। तो जब आप नाकाबंदी करते हैं तो वो तो एक्ट ऑफ वार है। तो आप ये किसको सिखाना चाहते हैं? किसने आपको ये सबक सिखाया है कि आप ये कहें कि आप हमारे साथ डायलॉग पे आ जाएं, सीज़ फायर है लेकिन हम आपकी नाकाबंदी करेंगे? तो वो क्यों इतने बेवकूफ़ हैं कि वो आके बैठेंगे इधर और आपके साथ बात करेंगे इस प्रेशर पे? वो क्यों नहीं कहेंगे? वो नाकाबंदी वो उनका करना आसान है या आपका करना आसान है? वो तो स्टेट ऑफ हार्मूज तो बिल्कुल उनके नाक के नीचे है और उनकी बिल्कुल सारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ
लंबी लंबी टनल्स हैं, उसके नज़दीक आप नहीं पहुंच सकते, और एक गोला वो फायर करते हैं सारी ट्रैफिक रुक जाती है, तो वो तो उनके लिए है। तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका के मफाद में है कि वो सीज फायर इफेक्टिव तौर पे करके, और पहले हाई लेवल की बात करने से पहले स्टाफ लेवल पे चीज़ों को तय कर लें, और फिर इसी तरह आई एम श्योर ईरान भी उस पर एग्री करेगा। ईरान एग्रीड था आने का, अभी भी उनकी यही शर्त है कि आप हमारी नाकाबंदी बंद कर दें, और सीज फायर आपने की है, लेबनान की सीज फायर आप करते गए हैं, तो हमने स्टेट ऑफ हार्मूज को खोल दिया था, तो हम रेडी हैं। तो ये सिर्फ ज्यादती जो है ना, दी बॉल इज इन दी कोर्ट ऑफ दी अमेरिकन, और दैट इज वाई अमेरिका में उनकी इंटरनली भी क्रिटिसिज्म हो रही है, नेटो भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, बाकी भी दुनिया के ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं, यूएनओ भी कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सर विंस्टन चर्चिल जो है ना, जो बरतानिया के वजीर आजम थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिकन आखिर में फैसला ठीक करते हैं, लेकिन पहले सारी जो गलत ऑप्शन हैं उनको एक्सरसाइज करने के बाद आप देख लेना कि ये फिर बैठ के अभी इनडेफिनेटली सीज फायर तो किए हो गए, लेकिन नाकाबंदी भी खत्म करेंगे और फिर डायलॉग होंगे, और इंशाल्लाह कोई हल निकल आएगा, कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। और उम्मीद पूरी दुनिया की यही है। पाकिस्तान इस वक्त मीडिएटर के तौर पे सामने आया हुआ है, सालसी हम कर रहे हैं, मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा नहीं होगा, क्या होगा। अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ भी जाऊंगी, चेयरमैन तहरीक के जवानाने पाकिस्तान है। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, आपको वेलकम भी करेंगे प्रोग्राम में। हाउ डू यू सी दिस टाइमली जो एक हमारे सामने डेवलपमेंट हुई, और दो के सीज फायर में जो है वो मुमकिन तौर पे इजाफा भी हुआ, लेकिन जो मुज़ाकरात का राउंड था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। एक तो आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है, इसको अगर काइंडली बढ़ा दीजिए। दूसरा ये है कि अब ठीक आ रही है जी नहीं, मैं तो कुछ समझ गया हूँ, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा था कि आगे के लिए बढ़ा दीजिएगा। बहरहाल लुबे लुबाद यह है कि जी बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जहाँ तक का ताल्लुक है मौजूदा सूरत हाल का, तो जाहिर है इस टाइम पे नजर ये आ रहा है कि मामलात के अंदर दोनों अतराफ नरमी चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते, और यही वजह है कि ईरान की जानिब से ये कहा जरूर गया कि हम ये सीज फायर जो है इसके अंदर एक्सटेंड किया टाइम अमेरिका ने, हमारी तरफ से तो कोई उन्होंने ना एक्सटेंशन की बात की, ना उसको रिजेक्ट किया और ना उसको एक्सेप्ट किया, जिससे ये साबित होता है कि जाहिर है ईरान की भी अपने ग्रीवियंसेस हैं। वो कहते हैं कि जी मज़ाकरात संगीनों के साए के अंदर बैठ के नहीं किए जा सकते, और एक तरफ उनके शिपों को आप हाथ डाल रहे हों, एक तरफ आप धमकियां दे रहे हों, एक तरफ आप जो है वो मज़ाकरात करना चाहते हों। और इसी वजह से जब तक कि इस्माइल बकाई जो कि तर्जुमान है वजारत खारजा ईरान के, जब तक उनकी जानिब से कोई हतमी बात नहीं आ जाती, क्योंकि मज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान भी उनकी जानिब से हुआ था, तब तक मैं समझता हूँ कि मज़ाकरात तो तातुल का शिकार हैं। लेकिन ये मज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, मज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। मज़ाकरात नाकाम होते तो जंग दोबारा शुरू हो जाती, और ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद की गई है, जो कि एक मैसेज है ईरान के लिए कि अमेरिका मजीद जंग नहीं चाहता। उसमें उनका बहुत नुकसान हो गया, पूरी दुनिया का नुकसान हो गया। इस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट जो है यूरोप में, बरतानिया में, हर जगह पे बेतहाशा बढ़ रहा है, जो जाहिर है एक बहुत तशवीश की बात बन रही है। दूसरा फ्यूल क्राइसिस है, जेट फ्यूल क्राइसिस है यूरोप के अंदर। 4 हफ्ते का उनके पास जेट फ्यूल तकरीबन रह गया है, जो कि मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा कर देगा। तीसरी, और फिर ये इजाफा होता चला जाएगा, ये खात्मे का नाम नहीं लेगा, और दुनिया एक ऐसी तबाही की तरफ चल पड़ेगी जो शायद जंग ने ना की हो। वो तबाही जंग के बाद के असरात जो है वो कर जाएंगे। बहरहाल इस सारे के अंदर अब तेल की कीमतें $100 से बैरल तजावज कर चुकी हैं, और आबनाए हुर्मुज के ऊपर कंट्रोल तो अभी भी ईरान का है। हालिया जो कल अमेरिका ने उनका एक वैसल परसों पकड़ा, उसके बदले में आज ईरान ने 2 जहाज अमेरिका के वो पकड़ लिए। एक के ऊपर वो कहते हैं कि जी लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था, लेकिन ईरान का मानना यह है कि जी ये यूएस के जहाज हैं, और यानी कि एक के बदले में 2। दूसरी बात यह है कि ईरान अब अपने हुर्मुज को अपना कंट्रोल कभी भी नहीं छोड़ेगा।
उनको अंदाजा हो गया कि ये एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट चीज है उनके लिए, जो कि न्यूक्लियर हथियार के बावजूद न्यूक्लियर हथियार से ज्यादा ताकतवर साबित हुई है। और साफ सी बात यह है कि इस टाइम पे ईरान के अंदर अवाम उनके साथ खड़ी है, जबकि अमेरिका के अंदर अवाम हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे कर रही है। 73% लोग अमेरिका के अंदर जंग के खिलाफ हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, और उनका मीडिया, अमेरिकन मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई अच्छे जज्बात नहीं रखता, बल्कि रोज उनके मुख्तलिफ चीजों को एक्सपोज कर रहा है। कंसिस्टेंसी एक पॉलिसी के अंदर अमेरिका के नजर नहीं आ रही। जो उनकी खारजा पॉलिसी है वो इस टाइम पे वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की जगह लगता यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप खुद चला रहे हैं, और वो भी सोशल मीडिया के जरिए। अगर ये गैर संजीदा रवैये अगर मुस्तकबिल में मजीद ज्यादा देर चलते हुए नजर आते हैं तो मैं समझता हूं कि मामलात बहुत खराब हो जाएंगे। ऑलरेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको नुकसान हुआ है। एक वोट से उनके इख्तियारात महदूद करने की जो करारदाद थी उसमें उनको कामयाबी हुई, लेकिन एक वोट का कोई हैसियत नहीं होती, वो कभी भी तब्दील हो सकता है। दूसरी जानिब उनके ऊपर अमेंडमेंट 25 की बातें की जा रही हैं कांग्रेस की जानिब से कि उनके इख्तियारात, क्योंकि वो कांग्रेस ये कहती है कि वो शायद ज़हनी तौर पर अपने आसाब खो बैठे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके से इख्तियारात लेके नायब सदर जेडी वेंस को दिए जाएं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं समझता हूं कि अब एक रियलाइजेशन का अमल शुरू हो जाना चाहिए अमेरिका के अंदर, ईरान के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। ईरान को भी ये अंदाजा होना चाहिए कि उनको कामयाबी वहां होती है जब पता चल जाए कि कब आपने रुकना है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप। तो आई थिंक ईरान को भी ये चीजों को रियलाइज करना चाहिए। ना अमेरिका ईरान की कमर लगा सकता है और ना ईरान अमेरिका को खत्म कर सकता है। जंग दोनों मिसाइलों के जरिए जारी रख सकते हैं, लेकिन तकरीबन 40 दिन के बाद रिजल्ट जो था वो तो पाकिस्तान में मुज़ाकरात की टेबल पे निकला। और अगर ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुल्क ऐसा है जिसमें ये मुज़ाकरात काबिल अमल हों। इससे वाज़ेह नजर ये आता है कि हालात इंतहाई एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में मैं ये देख रहा हूँ कि या तो ये मुज़ाकरात फौरी इसको अमल में आ जाएंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ा इशू यह है कि इस सब में एक स्पॉइलर है, उसका नाम है इसराइल, जो चाहता है कि अमेरिका इस खित्ते से किसी सूरत ना जा पाए, और उसके लिए वो हर किस्म की शरारत करेगा। और मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी शरारत दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पे ला खड़ा करेगी। इसलिए बेहतर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी ये बात तो समझ है, लेकिन मेरे ख्याल में जो वो अब एक कारोबारी शख्सियत की तरह बिहेव कर रहे हैं कि मैं जाते जाते जो कुछ इनसे हासिल कर सकता हूँ कर लूँ। हालांकि जंग के मैदान में जीतने वाला ईरान अब इस सारे मामले को टेबल के ऊपर शिकस्त में तब्दील नहीं कर सकता। ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। जहां डोमेस्टिक ऑडियंस अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए हैं और जहां वो फतह दिखाना चाहते हैं अपनी, तो वहीं डोमेस्टिक ऑडियंस ईरान की भी है, जिसने अपने खून से कुर्बानी दी है, शहादतें दी हैं, और साथ ही साथ इस सारी जंग के अंदर तकरीबन 2 मिलियन लोग जॉबलेस हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में ईरान के लिए चैलेंज है। ठीक है, फर्दर भी मैं आपसे बात करूंगी। मैं वापस जाऊंगी जनरल अब्दुल कयूम साहब की तरफ। सर, एक चीज़ और है इसमें जो हम देख रहे हैं कि अब आपको ये एंगल किस अंदाज से लग रहा है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आपका क्या एनालिसिस है, ख़ास तौर पे इस मामले पर जब हम देखते हैं कि अमेरिका जो है इस वक्त जंग से हाथ छुड़ाने के लिए बड़ा बेचैन है, और फिर लोग कुछ सवाल ये भी करते हैं कि मतलब आई वॉज एक्चुअली रीडिंग सम आर्टिकल्स भी और चीज़ें मैं देख रही थी, और इवन अपने उनके चैनल्स पे CNN और कहीं फॉक्स न्यूज़ पे कहीं कोई ना कोई बाहर जितने भी चैनल्स हैं उनको देख रहे थे। सो व्हाट वाज दी परसेप्शन या एनालिसिस या उनका जो तज्जिया था वो सारा वो ये कहते थे कि जी जब माजी में हमने देखा कि कोई भी जो प्रेसिडेंट होता था अमेरिका का, इतनी बड़ी सुपर पावर वो कहते हैं अपने आप को, सारा सब कुछ है, तो उसका जो फैसला होता था या जो उसका स्टेटमेंट होता था
वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता था, पेंटागन का भी बड़ा जिक्र होता था, और एक दो लोग और थे जिक्र और नाम थे जिनके शामिल होते थे, और कहा जाता था कि जी ये उनकी तरफ भी और सबके साथ शमूलियत के साथ एक बड़ा जो है स्टांस है। और ये आज एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो स्टेटमेंट देते हैं अगले घंटे ही उसके ऊपर कायम नहीं रहते। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सबको बाईपास करते हुए नजर आते हैं। अभी उनकी अपनी पार्टी से उनके खिलाफ मुखालफत है, ऑपोजिशन तो है ही मुखालफत कर रही ना, उनके इदारे उनके साथ एक पेश पे इन लाइन नजर आते हैं। फिर जो वो स्टेटमेंट देते हैं उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है, इसलिए क्योंकि वो एक तरफ कुछ कहते हैं अगले लम्हे कुछ कहते हैं। और फिर जब एक इतनी बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट कोई स्टेटमेंट देता है तो जैसे तो उसका एक वेटेज होता है, कोई बात होती है, वो चीज़ लोग कहते हैं कि वो नज़र नहीं आ रही, एक अजीब तमाशा बन गया है। जी जनरल कयूम, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसी सारी सूरत हाल पे हमें ज्वाइन करेंगे तुर्की से बुरहान काया तुर्क साहब हैं जो कि रुकने असेंबली हैं तुर्की के, उनको भी प्रोग्राम में गुफ्तगू में शामिल करेंगे। सो लेट्स वेलकम हिम। थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर बुरहान काया तुर्क फॉर ज्वाइनिंग अस। कैन यू हेयर मी? Yes, I hear you. Yeah, What thank you about so my very much. voice? Yeah, thank you so very much for joining us. I would like to know, how do you see these latest developments about the peace talks between Israel, America, and Iran, mediating by Pakistan, and now the phase 2 of talks has been paused because of the situation which has been done recently, and especially when the Iran is facing the issues, of course, regarding the trust deficit. So how do you see this latest development? You see, we first of all see this attack of Israel and America to Iran against every kind of international rule and regulations. That's first. Secondly, we believe that Iran and America should have an agreement as soon as possible, because people are suffering, people are dying, and people are in very, very bad situation. That's why there should be an agreement as soon as possible. And everyone, including Iran, America, and all the world should be thankful to the effort of Pakistan, the effort of Prime Minister of Pakistan, Field Marshal, and the Foreign Minister of Pakistan. They are trying their best to have a conclusion, to stop the war, to stop this kind of serious problems as soon as possible. That's why we just here follow that certain voices are coming from Iran and certain voices are coming from America. Of course, this is what we listen and we watch through the interjections from TVs and of course media, social and real media. But we appreciate the effort of Pakistan, and everyone should appreciate this effort, especially Iran and America should no more have very detailed excuses. It is not the time of excuses. It is the time to come for a conclusion. And they should respect the effort of Pakistan. They should honor the effort of Pakistan, and they should have an agreement as soon as possible. Because the people of Iran and the people of America want to have a kind of conclusion, peace, very soon, very soon, very soon, not late. Israel doesn't want to stop the war. Netanyahu will never be in the favor of stopping the war. We should not go through the wheels of Netanyahu.
Netanyahu is a killer. But the people of Iran and the people of America want to have peace and ceasefire as soon as possible. No more we should be talking of ceasefire. We should be talking of peace. Peace very soon. Peace is the need of people of America, and especially it's the need of Iranians. It is the need of everyone in the Middle East. This is what I want to say. Right. And during the, what we are actually watching the stance of the Iran, as we have seen lately, last night, the tweet of Foreign Minister of Iran, Mr. Abbas Rakchi, he stated in that the blockade of or the restrictions of Strait of Hormuz by America, they're claiming it. So this is the completely violation of the ceasefire. So how do you see this point? You see, now everyone is showing something that they want to show. We really do not know the realities. We don't know what is fact. The facts are explained by different groups, different countries, different states with a different way. But we just know that the people of America, in a huge majority, want to stop this war. And the people of Iran are already in need of stopping this war. However, in the case of Hormuz, or in the case of many ships carrying huge amount of economy, at the moment are in queue to go to. This also made suffering of trade, and the rates of petroleum has gone very high, and it probably go higher if the war does not stop. So not only people of Iran will be suffering, all the Middle East and the global suffering of economy will be seen very soon. That's why, internationally this should be observed and inspected who is really, during this ceasefire, who is at right position, who is at wrong position. That is because Iran declares something, whereas American declares some other things. But we just know that at the beginning, the attack of Israel and America to Iran was not justified. It was against the international law. It is not accepted. But now we have to first stop this war, and the ceasefire should continue. But no more ceasefire we should discuss. We should discuss a kind of conclusion, peace, very soon. And that is only possible with the effort of Pakistan. At the moment, Pakistan is doing something wonderful. A few days back, I told some other Pakistani TVs that we all are proud of effort of Pakistan. Pakistan is doing something great, something wonderful, with the Prime Minister, with the Field Marshal, with the Foreign Minister. Every Pakistani authority in Islamabad at the moment is creating something wonderful. This should be honored, and this should be congratulated, and this should be also accepted by both sides, America and Iran. Right. Mr. Burhan, I would also like to know in the end, can you hear me?
Mr. Burhan? Yes, please. I'm listening. Yeah. Yes. I would also like to know in the end that, okay, as you have mentioned that ceasefire should be continued, and as you have giving the blessings as well, and you hope for the good result oriented peace talks as well, you have mentioned, that's all really good. But the point again, one thing which is also been highlighted by the whole world, as we have seen, that there's always we have seen that when the two parties are into this negotiations, so both has to gain and lose something. It cannot happen that only one party become at the win-win position or the another will lose everything. Having said that, Pakistan always try to maintain or to balance both the countries, both the representatives in every aspect. So, as we had seen that after this the time the finishes of the time of the ceasefire, and on the request of the Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif and the Chief of Defence Forces Field Marshal General Asim Munir, the President of America Trump has says that he is extending the ceasefire date. But not only that is important, we really wanted to and we really aiming, because we have created all these mediation because of the aim of this, that they both should come on the table and negotiate in some points. But at the same time, if these violations or the patriotic remarks or something which just keep going on like this way, so how much you feel that this really impact on the negotiations, and how if it affect negotiations when these kind of things come up? You see, your voice is coming very weak. That's why I couldn't understand your question in the final steps. Can you tell me in short what did you ask? What was the question? Actually, I really wanted to know when the negotiations going on, during the negotiations, during the peace talks, if anybody from both the parties start giving or bashing or giving the patriotic remarks or giving the threats, so how it is important to restrain from doing all of these things, because it really affect or give a negative impact in the process of the whole negotiations. How do you see this? See, both the sides are unfortunately thinking of inter-political situations, and but it is not the time of populism, whether America is a victor or Iran has got victory. It is not the time to think of this. Ultimately, the people globally will decide who are the winners and who are the losers here. That's why both sides should no more go for this kind of threats, and the threats only disturb the ongoing process. It has no benefit. And one thing is clear, that now Mr. Trump is trying to influence the people of America for the elections coming by the end of this year. And the leadership of Iran is also trying to influence the people of Iran, so that we are the winners, we got the victory. This is not the time. The people of both the countries will decide who is the winner and who is the loser. That's why at the moment everyone should leave this kind of threats, and they should come to the table of peace, the table of negotiations, but with sincere attitudes. Unless they have sincere attitudes on the table, if they do not come with the sincerity on the table, they will not be able to get any results. At the time, everyone should be sincere enough
to come to the table, and when they are on the table, probably with the sincere attitude, they resolve the problems. Right. And Pakistan is trying their best. That is the time, that is the will of people of Pakistan, the will of people of Iran, and the people of America. Not only of these three, because Pakistan is really doing something honorable, and all the people of Pakistan are happy with this situation, but people of America want to end the war because it's not their war. It is the war of Israel going on the arm of Americans. Right. But the people of Iran are suffering a lot, and everyone in the Middle East, even in the world, they want to have a result, and they want to see peace. थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर बुरहान क़यातुर्क, दी मेंबर पार्लियामेंट हमारे साथ मौजूद थे तुर्की से जी। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान रेसिपी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।